गुड मॉर्निंग गाइज। आज है 26 जनवरी जो कि आपका रिपब्लिक डे है। मैं जा रहा हूँ अभी फिलहाल माउंट आबू इंग्लिश हाई स्कूल जो कि है नाहरानी में। जो वहाँ के प्रिंसिपल है राकेश भैया ने इनविटेशन कार्ड भेजा था उन्होंने, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मुझे आना है। जैसे भी आना ही है ऐसा बता रहे थे मुझे, इसलिए मैं निकल के आया हूँ, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया। तो मैं जा रहा हूँ स्कूल और वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी मतलब इस स्कूल के बारे में थोड़ा सा जानकारी मिल सके। जो हमारे नाहरानी में है, राकेश भैया के स्कूल है, माउंट आबू इंग्लिश हाई स्कूल। वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें। सो गाइस, मैं निकला हूँ अपने स्कूल की तरफ में। स्कूल का जो टाइम था ना वो बहुत मिस करता हूँ मैं, और मुझे स्कूल का वीडियो बना के मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं ज़्यादातर स्कूल का वीडियो बनाता हूँ। तो इसलिए सोचा कि मैं इस बार माउंट आबू इंग्लिश हाई स्कूल में चलता हूँ। ये सोचकर मैं आज माउंट आबू इंग्लिश हाई स्कूल में आ रहा हूँ। और अभी मैं फ़िलहाल पहुँचा हूँ कालामाटी गेट, और यहाँ से मैं लूँगा लेफ्ट टर्न। उसके बाद मैं चलूँगा स्कूल की तरफ। ज़्यादा दूर है नहीं यहाँ से, स्कूल नाहरानी में है। यहाँ से तो मुझे थोड़ा सा स्पीड जाना होगा, क्योंकि एक्चुअली टाइम भी कुछ ज़्यादा हो चुका है ऐसा लग रहा है मुझे। लेट तो हुआ है, लेकिन क्या करें, हर जगह टाइम मैनेज करके चलना होता है ना। मैं स्कूल पहुँचने वाला हूँ, ये नाहरानी है। कुछ लोगों ने मुझे बताया था यार कितना मीसामारी, रिकामारी, कोलामटी, नाहरानी का वीडियो बनाओगे, कभी बाहर भी जाओ, ऐसा मुझे बताया था कुछ लोगों ने। तो बात उनका भी सही था कि कितना मैं नाहरानी का वीडियो बनाऊंगा। एक्चुअली मैं लोकल हूँ तो पहले मुझे लोकल का ही वीडियो बनाना चाहिए ना। मीसामारी से भी बाहर निकलेंगे हम कभी धीरे धीरे, लेकिन जैसे कि मैं मीसामारी से ही बिलोंग्स करता हूँ तो पहले मुझे मीसामारी को एक्सप्लोर करना मुझे ज़्यादा ज़रूरी है ना। मीसामारी के बारे में मुझे बताना होगा, मीसामारी का कोना कोना मुझे दिखाना होगा पहले, उसके बाद हम दिखाएंगे बाहर का एरिया। तो मैं स्कूल पहुँच चुका हूँ। तो चलो गाइस, अंदर चलते हैं स्कूल के अंदर। लाइफ में पहली बार यार कोई मेरी स्वागत के लिए देखो ऐसे रुका हुआ है गेट के सामने में। लग गया। चलो पार्क कर लेता हूँ बाइक को, उसके बाद देखते हैं आगे का नज़ारा। पार्किंग में लगा रहा हूँ मैं पहले बाइक को, ठीक है। देखो ये बच्चे ना मुझसे मिलने नहीं आ रहे, तो बाइक को देख के आ रहे, पता है आपको? हाँ, उस दिन मिला था। कहाँ मिला था उस दिन, कहाँ पे मिला था? तो ठीक उसके बाद ही सभी लोग मुझे दिखाई दिए। मैं सभी को हाय हेलो किया। ये मान सिंह सर थे, हमारे गांव प्रधान, और भी लोग थे, उनसे सभी से मैं मिला। फिर उसके बाद ही जस्ट 2 मिनट के बाद ही वहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट हो ही चुका था। मैंने सोचा कि मैं शायद लेट पहुँचा, लेकिन नहीं, मैं राइट टाइम में पहुंचा था। मैं पहुंचते ही 2 मिनट बाद ही उनका प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका था। वहाँ पे जितने बच्चे थे सभी ने अपना अपना पोजीशन ले लिया। जो प्रिंसिपल थे उन्होंने कुछ बताया रिपब्लिक डे के बारे में। जो उपाध्याय सर हैं उन्होंने भी, जो हमारे चीफ गेस्ट थे उपाध्याय सर जिन्होंने फ्लैग होस्टिंग किया उस दिन, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से जानकारी दिया रिपब्लिक डे के बारे में, बहुत अच्छी तरह I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. हमारे माउंट आबू इंग्लिश हाई स्कूल का ऐसा परेड आपने नहीं देखा होगा पहले। चलिए दिखते हैं।
Valman Rai to come forward first. Okay, he is Valman Rai. So he was the first only student from our school, and he was the only one student who first in the 2021 he passed out from our school. And for that, I would like to thanks to his father and to him also, that he believed on us, that being one student also we could take him to the matriculate and passed him out. And for that, I would like to thanks to his father for that. Now, first we'd like to felicitate Valman Rai. So I'd like to request our President of Mount Abu English High School, Upadhyay sir, to felicitate Valman Rai. Valman sir, I'd like to request to come forward here. So I'd like to request Chief Guest. Okay, I would like to request Aijul sir to come forward, please. And all teachers are requesting to read it out. So I'd like to request Aijul sir to read it out. Good morning to all. So this certificate we can consider is as a achievement award. So here are the sentences written on the certificate. So firstly, strive towards perfection. Mount Abu English High School, Naharani, Misamari. Felicitation to Valman Rai. Mount Abu English High School feels proud to felicitate you on your spectacular performance in the HSLC examination 2021 conducted by SEBA by securing 75% marks. We hope that your individual intellect and the knowledge acquired through hard labor will able to inflate an atmosphere of respect and honor in the society and encouragement among the coming generation. We wish that your hard-gained knowledge and talent will be able to boost the progress and development of the nation. May all your virtues shine. Wishing you a bright future. Thank you. Thank you very much to Aijul sir. Thank you. Now, Valman Rai, you can take your seat. Next, I would like to request, that is from the students who passed out in 2022, and from that I would like to request Tinkle Bista to come forward, and I would like to request our Vice President of School, Devi Ram sir, to felicitate Tinkle Bista and with a certificate. So Tinkle is willing to say something, so message from Tinkle Bista. Good morning to everyone and happy Republic Day to all. Respect Honorable Sir Chief Guest, Sir Principal, teachers and my dear juniors. My name is Twinkle Vista and I would like to introduce myself as an past student in 2022. So yes, only one thing I would like to tell you, that upcoming students of HLSC exam, that do please do listen to the teachers, what they say, what they are advising you, what they are suggesting you, because not gonna lie, but this kind of teacher in our school we had, you are not going to have this kind of teacher in outside in any of the school or colleges you will be. Okay, please do listen to them, and thank you and wishing a very good luck for your upcoming exams. Thank you everyone. Thank you very much, Tinkle. So it was a very good message to all the upcoming HSLC students, and we all wish you a very bright future. Now I'd like to request Damodar Lakkai, and he got the percentage 72.16%. So I'd like to request Balaram sir to present the certificate with felicitation also. Thank you very much, Damodar, that he took the time very seriously and studied, and because of that hard work, he got the first division with 72.16%. So I'd like to ask all the students to clap for him once again. It is an example for us, and we regularly to say to all the junior students who are here about him. So it is a very good example for our schools. Thank you very much, Damodar Lakai. Next, Parvati Devi. So I like to request Parvati Devi to come on stage, and she also passed out from here in 2022, securing 72%. And I would like to request our village Sarpanch, Mansingh Rai, to come forward and felicitate and give the certificate to Parvati. Thank you very much, Parvati.
Next, I would like to request Jharna to come on stage. Now I would like to request Khemraj Adhikari sir to come forward and felicitate Jharna with a certificate also. Thank you very much, Jharna Parajuli. Now I would like to request Rohan to come forward. So I want to say something about Rohan. So Rohan, we did very hard work. Even his parents, I will have to say in Hindi because many of our parents will not be able to understand. So रोहन का बारे में बताना चाहूँगा थोड़ा बात. उनका जो पेरेंट्स थे वो लोग बहुत टेंस में थे कि सर क्या होगा इसका मैट्रिक में, फेल करेगा. वो लोग सोचते थे कि फेल करेंगे बोल के. मैंने उनको बता दिया पेरेंट्स को कि नहीं, हम लोग जोरदार लगेंगे, इसको जैसे भी हो एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन तक हम लोग पहुँचाएंगे. और हम लोग जोरदार सभी टीचर्स लग के मेहनत करके जोरदार उसको बोलते ना एक ठेल ठाल के भी सेकेंड डिवीजन तक पहुंचा दिया उसको. सो इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ अस, बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क ऑफ रोहन ऑल्सो. एंड थैंक यू रोहन. सो यू आर नाउ स्टडिंग देयर इन दिघाजुली. सो विश यू अ वेरी ब्राइट फ्यूचर अहेड and you need to do hard work really. Thank you very much. So I'd like to request our chief guest Upadhyay sir to felicitate Rohan Chhetri. One side to I'd like to request all the parents and students to clap. Clap loud. Thank you very much. Now I'd like to request Anupriya to come forward. So Anupriya also passed out HSLC exam in 2023, securing 74.5%, very less person behind getting star mark. Anyway, she missed by star mark. Anyway, she will be doing hard work. She is studying now in Dimension Academy in Tezpur, taking the science stream, and we are looking forward that she will excel in the HSLC exam coming generation, and she will have a bright future ahead. To felicitate Anupriya Rabha, I would like to request Deviram sir to come forward and felicitate her with a certificate also. Okay, one thing I want to share about Kabir. Shall I share? Kabir? Okay, मैं हिंदी में बताना चाहूँगा. कबीर छेत्री when he came for जब वो एडमिशन के लिए आया यहाँ पे, और उसके बाद जब क्लासेस हो रहा था स्टार्टिंग, तो कबीर एक सप्ताह के लिए कंटिन्यू रोया. Yes, Kabir. Then mother was there. My mother Radhika Pradhan. So a big clapping should be to Radhika Pradhan, my mother. एक सप्ताह तक स्कूल में नहीं था, वो स्कूल में आता था लेकिन क्लास के वक्त वो जाता था हम लोग का वहाँ घर पे और रहता था उसका ग्रैंड मदर के साथ. So it was a very big thing for him that he studied continuously here and he passed out from here. But I have said before also, you need to go and meet her personally and give some gift also. You have to do that. Okay. So I like to request Khemraj sir to felicitate Kabir Chhetri. Thank you very much, Kabir. Now I like to request Ram Sharma to come forward. And he also passed out from HSLC exam 2023. So I like to request our chief guest Upadhyay sir to felicitate Ram Sharma. Thank you very much, Ram. Now I'll like to call the star of our school. The SLC exam passed out 2023, and because of her, we are in a very good position. And our school name is spreaded throughout the Misamari, not only Misamari, we can say throughout the Thelamara area. It is because of her that she is now studying in Dimension Academy in Tezpur, taking science stream, and we are looking forward that she will do great and big thing in future ahead. All our blessings are there with all her also and to all the students also. And all the teachers are requesting that these felicitations will be done by me. And I am also very happy that I am willing to do the felicitations to the Sarita Devi. So I would like to request Sarita Devi to come forward.
Okay, I want to once pick up to Sarita Devi. All of you, stand up, all of you. This is a big chance, huh? Okay, I would like to request Sarita to say something and try to inspire the upcoming batches. Thank you, sir. Good morning, everyone. Honorable Chief Guest, respected Sir Principal, teachers, and all the juniors and parents. First of all, Happy Republic Day to everyone. मैं हिंदी में ही बोलना चाहूँगी. सारी टीचर्स बोल रही कि वो सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, बट आई डोंट थिंक सो कि it was only possible because of my hard work, who inspired me and who motivated me anytime, everywhere that you can do that. मुझे खुद पे विश्वास नहीं था कि मैं उतना कर पाऊँगी, बट उन्होंने मुझे इतना इंस्पायर किया कि हाँ मुझे लगने लगा कि हाँ मैं कर पाऊँ. तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि तुम दूसरों को मतलब दूसरों में अपना इंस्पिरेशन मत बनो, तुम खुद अपने लिए एक इंस्पिरेशन बनो. तो यही कहना चाहूँगी. थैंक यू. Thank you very much, Sarita. Yes, no doubt, all the teachers did hard work, but it's because of your hard work that you have done this much big result. And not only our school, throughout our village area, this circle area, the school name you have made it proud students. So I like to request all of you to once again clap for all the SSLC passed out students. Thank you very much. Now, prize sports and games prize distribution ceremony is there. So I like to request Damodar sir to give out the result about the HSLC.